fundamental duties are basically for citizens. Okay, and now the second point, fundamental duties are warnings are warnings against anti-social activities. Warning against anti-social activities. What do you mean by this anti-social activities? Fundamental duties are warnings against anti-social activities. What do you mean by? My voice is not coming. Is my voice audible? Please, now is it clear? Yes, my voice is coming. Harsh ko bol do. Somebody write in the chat box, voice is clear. Okay. Fundamental duties are warnings against anti-social activities. Okay, this is basically warnings. But now, what is anti-social activities? Navya, please tell me, what are anti-social activities? What are anti-social activities? Navya's microphone is off. Lakshmi, what are anti-social activities, dear? Sir, activities like disrespecting the flag, Indian flag. Yes, like burning of Indian flag. These are all anti-social activities. So basically, fundamental duties teach a citizen of a nation how to respect our national emblem, national flag, and all. Okay, national anthem and all. So it is like a warning against anti-social activities. In bracket, write down like burning of national flag. In bracket, write down like burning of national flag. Okay, like burning of national flag. Okay. Now, write the third point. Navya is writing something. What activities? Activities which are threat to country. Right, Navya. Fundamental duties. Fundamental duties are reminder. Reminder to the citizens. Fundamental duties are reminder to the citizens about their duties. Okay, so basically fundamental duties mentioned in the part 4A of Indian Constitution, which includes Article 51A, tells the citizen what are their duties. So fundamental duties are basically reminder to the citizens what are their duties. Okay, and it also plays a vital role. It also plays a vital role in promoting discipline and commitment in the society. It also plays a vital role in promoting discipline and commitment in the society. Okay, it also plays a vital role in promoting discipline and commitment in the society. Okay, so basically, what are the four? What can we repeat the third point? Fundamental duties are reminder to the citizens about the duties they have to perform. Basically, it reminds the citizen what duties they have to perform. Okay, so these are the 4 points which completely summarizes the fundamental duty. ये जो 4 point है fundamental duties भारत के संविधान में क्यों ऐड किया गया है उसकी summary है. ठीक है. So anyone has any doubt in these 4 points? Anyone has any doubt in the 4 points? Anyone? Because in this class I am going to summarize the. Okay. Now, see, we have certain loophole in fundamental duties. We have certain loophole. What are the loophole? Okay, some problem are there in fundamental duties. What are the loophole? What is? Can anyone tell? What are the loopholes? What are the loophole in fundamental duties? Anyone?
Come on, guys. Sharda. Sharda. Yes, sir. What are the loophole in fundamental duties, Sharda? Sir, I don't know, sir. Try once. Very good, Aman. Fundamental duties are non-enforceable. Fundamental duties are non-enforceable. Non-enforceable. That means it is not mandatory duties. Fundamental duties are not non-enforceable. That means it is not mandatory to enforce fundamental duties. Even if a citizen of India is not performing his fundamental duty, he cannot be punished. Okay, that means fundamental duties are non-enforceable. Okay. Okay, so this is the biggest loophole. Anyone has anything to ask? You guys are not asking anything. What happened? हर समझ में आ रहा है भाई? It's clear. Okay. Now I have to see. देखो यार, to be very frank, questions will come from this part only. Whatever I have taught till now, questions will come from this part only. But see, appear for the paper and only 1,000 odd students cleared the exam. Because in mains answer, when you are writing mains answer now, you have to include lot of data into your answer sheet. अगर आपके पेपर में बहुत सारा डाटा होगा, तो then your answer will look good and they will give you good marks, like 10 out of 7, 8. If you are getting 10 out of 7 or 8, no. So like if you are getting somewhere near 8, it is considered to be a very good marks. So and average answer will get 4, 4.5. Okay. So basically what you have to do is you have to get a good score in each and every answer. So you need lot of data. That is why I give you a lot of additional information apart from the books also. So I'll add certain more points to it. Cases. Okay. Fundamental duty से जो भी cases हुआ है. So please write case number 1. Case number 1. That is Bijoy Emmanuel. Bijoy versus State of Kerala case. Versus State. Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case. Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case. And anyone, this case is also called as, this case is also called as no idea. ऐसा कोई केस नहीं, no idea वाला केस. सौम्या रंजन उत्तम भाई बताओ. साक्षी पलक नव्या, this case. Arya can answer because Arya is from Kerala, so you can answer. Arya, switch on the microphone. Sir, I don't know, sir. How is your fever? I am not asking a question. How is your fever? It's better. It is there. It's still there, but it's better than yesterday. It is Corona, Arya. I hope you don't get. It is Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case. Okay. So this case is also called as National Anthem case. This case is also called as National Anthem case. Okay. Aman has given you an advice, Arya. Take Corona. Is it regarding the playing of national anthem in theatre? No. No. So please write down. Please write down. इस केस को नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है. In Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case. In Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case, also called as National Anthem case. Also called as National Anthem case. In this case, it was said, sing national anthem. If a person cannot sing national anthem due to his or her personal religion,
okay, due to his or her personal religion or faith, then it is okay. Then it is okay. In this case, basically it was told that अगर कोई व्यक्ति, if a person is not able to sing national anthem, अगर कोई व्यक्ति national anthem sing नहीं कर पा रहा है because his or her religious law does not allow, yeah, what he is believing him does in whatever he is in believing in, it does not allow, then it's okay. Okay, this case it was Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case. The judgment was given, okay, by Kerala. Some religious even the Muslim community, like there was an Islamic statement, certain Muslim community, not the Muslims of India, and they were like, we won't sing the Indian national anthem, they have their own. So this type of cases arise in the society, not the entire Muslim community but certain sects of the people. This case, like they told that they will not sing the national anthem. Okay, so this kind of cases arise. Okay, this is why I mentioned this case. It can be religious community or religious law. It can. Why I mentioned these cases before, because of some other reason. Okay, please write down. In order to overcome such challenges, Article 51A. Article 51A was incorporated into Indian Constitution. Into Indian Constitution. Article 51A stated that it is the duty of every citizen. It is the duty of every citizen to respect national flag and national anthem. It is the duty of every citizen to respect national flag and national anthem. Right? हर citizen का काम है. See, now I will relate it to something else. देखो, I told you a loophole. What was? Somebody switch on your microphone. Anyone? Aman. Yes, sir. Aman has switched on. Arya has switched on. Aman एक loophole बताया था. I told you a loophole that fundamental duties are not enforceable. बताया था. Yes. Okay. उसके बाद in Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case मैंने ये बताया, I told you this कि High Court ने Kerala, obviously State of Kerala मतलब Kerala High Court have given a verdict that if due to personal belief or religion or faith, if a person is not able to sing national anthem, it is okay. Okay. Yes. Ab Article 51A says that it is a duty of every citizen to respect national flag and national anthem. Statement. Relate this. पहला क्या कहता है कि भाई fundamental duties are not enforceable. That means if someone is not following the fundamental duty, he is not punishable. Okay. Now Article 51A says that it is the duty of citizen to respect the national flag and national anthem. Okay. What if the citizen does not respect the national flag and national anthem? What will be done? What if the citizen does not respect the national flag and national anthem? This is my question. क्योंकि पहली बोल दिया fundamental duties are not enforceable. Okay. फिर क्या होगा? तो कहीं और भी कुछ लिखा होगा. क्या लिखा है? नहीं पता. पलक, आर्या, साक्षी, नव्या. Sir, it is in the constitution, it is that fundamental duties are not directly enforceable by the courts, but parliament is free to enforce them by any suitable legislation. What is suitable legislation? मतलब by law. What is law? Like if parliament is free to impose any appropriate penalty or punishment if someone is failed to दोबारा बताओ. First statement was correct. Second statement misquoted. Navya, please wait.
Wait, huh? Okay, Sakshi, I don't know, remember the case date. Okay, exactly, I don't remember the case date. Palak, repeat the statement. Uh, First one is that in the constitution it is not mentioned that that fundamental duties are not directly enforceable by the courts. Wait, But wait, she's right. Palak is right. She is saying that fundamental duties are not directly enforceable. Palak, अपने को mute करना. My voice. Fundamental duties are not directly enforceable. अगर directly enforceable नहीं है, तो what was the second statement, Palak? but they are enforceable by law. That is, Parliament बस. can Second statement is fundamental duties कोई भी directly enforce नहीं कर सकता. If a person is not following a fundamental duty, then the person is not directly punishable. But in order to enforce fundamental duties, Parliament of India, that is Lok Sabha, Rajya Sabha, and President of India can make a law or an act. Through that act, अगर वो act को violate करते हैं, तो punishment मिल सकता है. Got it? देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल. अगर कोई बंदा फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकता. बट भारत के पार्लियामेंट के पास ये राइट है कोई भी एक एक्ट या लॉ बनाने का. अगर वो लॉ और एक्ट में लिख सकते हैं कि यार ये फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको वायलेट करेंगे तो ये वाला पनिशमेंट होगा. थ्रू दोस लॉ एंड एक्ट अ पर्सन कैन बी पनिश्ड. क्लियर? क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट? Anyone has any doubt? So, wait. Please write down. Please write it down. Yeah, obviously non-justiciable too. Non-justiciable too. Okay, please write down. Fundamental duties are not directly enforceable, but the Parliament of India right to pass an act has a right to pass an act in order to enforce fundamental duties. Parliament of India has a right to pass an act in order to enforce fundamental duties. Okay. Now make this thing in bracket. अब मुझे एक बार बताना कि if you disrespect our national anthem and national flag, it is a punishable offense. If you disrespect our national anthem and national flag, it is a punishable offense. Why? Because fundamental rights तो not enforceable है, फिर वो punishable offense कैसे हो गया? Anyone? Yeah, switch on. There may be an act already in existence. Yes, there is an act in existence which states that punishing, it is a punishable offense if you like show disrespect to a national honor, like any national flag or national anthem. So write down. In year 1971, an act was passed. This act is called as prevention of insult to National Honor Act. Prevention of insult to National Honor Act. I'll write down the act's name. Prevention of insult
to National Honor Act 1971. That means national honor, anything which gives a prestige to our nation, like national flag, national anthem. If you disrespect that, it is a punishable offense as per this act. समझ में आ गया? Fundamental duties non-enforceable है, but Parliament time to time they can make an act. They can make an act to enforce fundamental duties. And आज के time पे, if anybody is disrespecting our national flag or national anthem through this act which was made in 1971 by the Parliament of India, the person can be punished. Clear or not? बाकी सब नव्या, उत्तम, शारदा, anyone has anything? Same with DPSP are enforceable. Through this act, any act. Somebody asked a question of Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case. Who was the person who asked? Sakshi, I guess. Sakshi. The case was held in year 1986. Okay, what is called as disrespecting? Disrespecting, matlab if you are tearing the national anthem, tearing the national flag, and if you are not standing when the national anthem is played, or if you are stabbing the national flag, okay, so this is kind of disrespect. Okay. Anything else? Many people don't stand. So it is a punishable offense. Yeah, case can be filed if someone does not stand. Okay. And it should not be पकड़ा तो किसी को नहीं पकड़वा सकते हैं अगर it can be an action according to this act. ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे एक्शन नहीं लिया जाता. Okay. Now I want to tell you one more thing, one more famous case. Microphone and ask. So, based on religion and their culture, you said that if someone doesn't sing national anthem, it is not punishable offense, right? See, in Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case, it was the Supreme Court's decision that it was against Kerala government, and in that case, it was Supreme Court's decision that if somebody is following a particular religion, or he does have a faith in something, and he does not want to sing the national anthem, it is his personal prerogative. We won't force that person. Okay. Okay, it was in that case judgment. So Okay. if it is in that case judgment, even if other people also does the same thing, will the judgment be same? No, it's not necessary. It's not necessary. In some other case, Supreme Court can give another judgment. It is the prerogative of the judge. I have already repeated this many times in the class. Supreme Court's judgment can vary from case to case under the same scenario also. हो सकता है कि if I am listening to a case and I might have a different opinion, and if other judge is listening to a case, he might have a different opinion. Okay. Yes. So that is against constitutional, right? See, not singing national anthem and not standing when national anthem is played. Is it against constitutional? It is not unconstitutional. It is illegal with respect to this act. Okay. It is written in the DPSP. It is written in the fundamental duties that we should respect our national flag and national anthem. But it is same at the same time. It is also written there. It is not enforceable. Right. That means if somebody is not following the national anthem, it is not punishable. It is not punishable. But as per this act, yeah, as per this act, it is punishable. Okay. This is as per Supreme. In which case, Aman? In which case? See,
in that case the scenario might have been something different. उस केस का सिचुएशन और सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है when a judge is listening to a case. Suppose we both are having an argument. If we both are having an argument and what's all the other fundamental duties are non-punishable? Yeah, obviously, I'm talking about all the fundamental duties, right? See, if we both are having an argument and like I tried to attack you and for self-defense you killed me, the punishment will be very less in that scenario. There might be a chance like the punishment is, there is no punishment, but you try to kill me intentionally, then the punishment will be very harsh. So whenever the judge is listening to a case, it depends upon that scenario also, okay, what scenario the case is taking place. Okay, so in Bijoy Emanuel case, it was said that if a person's religious belief or a person's faith does not allow him or he does not want to sing national anthem, yeah, it's okay. It's okay. Don't sing the national anthem. Okay. Okay. Now, yeah, this was a controversial case I took. एक और चीज समझो, there are certain fundamental duties which are non-enforceable. Okay, but there has been act incorporated by the parliament. Okay, कुछ fundamental duties है जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है, बट कुछ एक्ट इनकॉर्पोरेट किए हैं पार्लियामेंट द्वारा. ओके, सो the parliament wants or the government wants the citizens to follow those fundamental duties. काफी सारे ऐसे fundamental duties हैं. I'll quote one more example. Write down second case in SC Mehta versus Union of India case. This case was in year 1983. Okay. Do you know this case was regarding what? किस चीज के regarding था? Right to, write down, this case was regarding right to enjoy pollution-free environment. Right to enjoy pollution-free environment. Right to enjoy pollution-free environment. So this case was regarding pollution-free environment. This case was regarding pollution-free environment. Okay, this case was regarding that. Okay, pollution-free environment. Okay, now see, this validity नहीं है, enforceable नहीं है, तो फिर यार how can we put this into an act? मतलब फंडामेंटल ड्यूटी ये जो है, ठीक है, नहीं है, फिर ऑब्वियसली जैसे पलक ने बोला था इसके लिए एक एक्ट बना होगा. कौन सा एक्ट बना होगा? एनीवन? At least say yes or no something. Okay, please write down. The court in order to implement right to enjoy pollution-free environment. Right to enjoy pollution-free environment. The court, in order to implement right to enjoy pollution-free environment, ordered that central government should introduce protection and improvement of natural environment
as a chapter in every educational institution books. In every educational institution books. See, wait, listen to me very carefully. Right to enjoy a pollution-free environment. Right to enjoy a pollution-free environment is not mentioned. In, like, it is just it is non-enforceable. Okay, it is non-enforceable. Now the people of India, the citizen of India should be aware of this. मानते हो यार, जब मुझे पता होगा तभी तो, when I will be aware, then only I will be able to deliver it. Okay, so सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि right to enjoy a pollution free environment, this can only be done, okay, when people are aware of it. And how to make people aware of it? First thing, a chapter would be added in every educational institution book. The chapter's name is Protection and Improvement of Natural Environment. Protection and Improvement of Natural Environment एक chapter होगा which will be added in every educational institution book, so that citizens are aware of this right, that they have a right to live in a pollution free environment. Clear or not? I haven't finished yet. If you are clear with this, then I'll continue further. What doesn't Article 21 में भी कहीं ना कहीं mentioned होगा. It comes under Article 21 also, but it is a duty of citizen. It is a duty of citizen to keep. Article 21 says that it is fundamental right. Article 21. तो basically government क्या करता है pollution free environment रखने के लिए. जब मैं DPSP या fundamental duty की बात कर रहा हूँ, तो it is our duty. हम लोग क्या करते हैं environment को साफ रखने के लिए. So there is a difference among our duty. Yeah, right. Okay. So अब इतना समझ में आ गया. Have you guys got this much? Lakshmi, Manju, Navya, Palak, Satyam. Up. Now listen. In order to support this, like, अब यार, we should live in a pollution-free environment. Okay. अब यार कहीं ना कहीं किसी एक्ट में तो लिखा होना चाहिए कि अगर आपको पोल्यूशन वायलेट होता है, आप मतलब पोल्यूशन लेवल राइज होता है, तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है, ऑब्वियसली देयर शुड बी सम एक्ट. सो प्लीज राइट डाउन in order to make sure the citizens are getting a pollution free environment. Can anybody tell that which is this fundamental duty? अगर मैं pollution free environment की बात कर रहा हूँ, which is this fundamental duty? Fundamental duty article number बताना है. Article number. Pollution free environment. Anyone? 7. क्या? 51A का 7. Fundamental 51 duty ना. 51A का G होगा ना? हाँ, that's G. It is 51A subclause G. Okay. So in order to implement this article, I have made you write all these things. Okay. In order to make you write, in order to implement this article, 2 supporting acts are there. दो act है जो इसको support करते हैं. The first act is Wildlife Protection Act. Okay, Wildlife Protection Act. So what I was making you write, ठीक है? एक बार repeat करना that statement, last statement. अरे repeat the last statement. अमन repeat करना. In order to make sure that the citizens are getting a pollution-free environment, as per Article 51A Clause G. Article 51A Clause G. Certain provisions
certain provisions are incorporated, certain provisions are incorporated in Wildlife Protection Act and Forest Conservation Act. Wildlife Protection Act and Forest Conservation Act. Forest Conservation Act. So ये दोनों सपोर्ट करता है कि लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये दोनों इसको सपोर्ट करता है कि 51A के सारे प्रोविजंस, 51A क्लॉज जी के सारे प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो. दैट मींस through this act a person environment. So that means these are the two acts, Wildlife Protection Act and Forest Conservation Act में काफी सारे provisions ऐसे हैं. There are large number of provisions which are mentioned in this act which enables the government to ensure and the citizens to ensure a pollution free environment for themselves. Clear? So मैंने कहा था ना, it is not enforceable, but through the acts of the parliament, these things can be enforced. Clear or not? Clear or not? Aman, ask. The Environment Protection Act or which acts? Environment Protection Act, उसमें भी अगर pollution से related कोई provision हो तो मेजरली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ज्यादा प्रोविजंस थे. अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिसके प्रोविजंस के थ्रू ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सकता है. इसमें ज्यादा प्रोविजंस थे तो मैंने इसलिए मेंशन किया. ओके, एक चीज और इस चैप्टर में मेरे को बताना है, मतलब इस सेक्शन में, मतलब पार्ट 4A में 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत दो चीज भारतीय संविधान में ऐड हुआ था. 86 अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट वाज इट? इट वाज इन 2002. व्हाट वाज इट? ओके, 86 अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज इन 2002. So according to this article 21A, so we will divide it into two parts. Very good, Soumya. We will divide it into two parts in order to avoid a confusion. ओके, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. वन इज फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था, टू अवॉइड अ कंफ्यूजन. नाउ व्हाट वाज द फंडामेंटल राइट व्हिच वाज एडेड? व्हिच वाज द फंडामेंटल राइट? द फंडामेंटल राइट व्हिच वाज एडेड वाज, the fundamental right which was added was Article 21A, which is called as right to education. Article 21A, right to education, that is free and compulsory education to 6 to 14 years of age. 6 to 14 years of age के लिए free and compulsory education. Wait, I'll write it properly here. So 86 amendment, 86 Amendment Act, 86 Amendment Act 2002 added two things in Indian Constitution. Added two things. Just a moment. '86 Amendment Act added two things in Indian Constitution. That is a fundamental right, and a fundamental duty. So fundamental right was Article 21A, which is right to education. And what was fundamental duty which was added? What was fundamental duty which was added? भैया ये कहता है कि government should give free and compulsory education to children between 6 to 14 years of age. Okay, so write in your notebook, 86 Amendment Act 2002 added a fundamental right, that is Article 21A, which stated that government should give free and compulsory education to children between 6 to 14 years of age. Between 6 to 14 years of age. Okay. Agreed? भैया सो गए क्या? Okay. Now, what was fundamental duty? What was the fundamental duty which was added? It was Article 51A subclause K.
Article 51A subclause K. As per that in this article, it was duty of the parents or the guardian. It was duty of the parent or guardian. Right now, as per this article, it was duty of parent or the guardian to impart education to their kids between 6 to 14 years of age. मतलब एक तरफ फंडामेंटल राइट में ये कह रहा है कि the government should provide all the facilities that the kids between 6 to 14 years of age gets a proper education. Point number one. एंड दूसरी तरफ फंडामेंटल ड्यूटी ये कह रहा है ये पेरेंट और गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट और गार्डियन. इट इज द ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट और गार्डियन to impart education which is provided by the government. मतलब एक तरफ पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन. तो डिफरेंस क्लियर कट समझ जाना. Age is 6 to 14 years of which one is fundamental rights and one is fundamental duties. Anyone has any doubt till now? All I want an answer from all. Then only I will move ahead. Buana, Arya, Aman, Harsh, Soumya, Uttam, Palak, Manju. Now, we'll go back to our presentation as usual. See, apart from the presentation, I have added a lot of cases and many things in this. So please, whatever I have given you additional, so please focus on that also. The presentation in fundamental duties was just this much, but I have added a lot of things, extra things in this. Okay, so I've explained you guys in an elaborated form. And guys, Part 1 of Indian Constitution, the Union and its territories is over, citizenship is over, fundamental rights is over, DPSP is over, Part 4A, fundamental duties is over. So we are into last part of Indian polity. That is the Union. Hope you have understood whatever I have been taught in the first few classes. Like, जितना भी पहले पढ़ाया समझ में आ गया समझ में पक्का. Yes. So we are into last part of Indian polity, and we will start this in a different way. We'll start with directly the Honorable President of India. Okay. So you don't have to look at the slides. Okay. I'll give you the concept. Very carefully and just write down what I'm telling. Okay. So shall we start with the President of India? Okay. Now, Arya, Buana, please unmute yourself. Next is Disha. Buana, please unmute yourself. Sir? Buana, who is the President of India? Don't Google it. Who is President of India? Don't write in chat box. You are now unmuted. Okay. Your name is Buana. मैंने बुआना का नाम लिया था ना दिशा. Now you will get punishment. Okay, who is President of America? Who is President of America? अच्छा, अमन ने लिखा डोनाल्ड ट्रम्प. Who is President of Russia? Who is President of Russia? Putin. Who is President of France? Who is President of France? What is his full name? Buana, what is the full name of France president? Okay, great. It is Emmanuel Macron. Okay, who is president of Sri Lanka? Don't Google it, guys. Who is president of Sri Lanka?
वेरी गुड, गोताबाई राजपक्षे इज करेक्ट आंसर। बस प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म, इतना ही जानना था, है ना? इट इज वेरी सिंपल चैप्टर, नो, है ना अमन? बस यू आर जीनियस, आई डोंट नीड टू टीच यू एनीथिंग, Yes, sir. है ना? बहुत सिंपल है, अब सुन लो कहानी बस। नाउ प्रेसिडेंट, व्हाई वी नीड अ प्रेसिडेंट, why we need a president, why we need a president of a nation. If in case of India, why we need a president, when everything in this nation is performed by honorable prime minister, then why do we need a president? Is the president of India just a stamp, or is the president of India just a dead rubber? Okay, is the president of India just a dead rubber? What is the constitutional position of the president? भाई कुछ करते भी हैं या बैठे रहते हैं अपने कुर्सी पे? These are the things we need to know about this in this chapter. So we are starting with part 5 of Indian Constitution. Part 5 of Indian Constitution, like as per our syllabus, which is the Union. The first thing we are going to do in this is president. Okay, president. So भारत के संविधान में which article of Indian Constitution states that there shall be a president of India? Please unmute yourself and speak. Article 52. Article 52 states that there shall be a president of India. Very good. So write down heading president, write down heading president, and write down, as per Article 52 of Indian Constitution, as per Article 52 of Indian Constitution, there shall be a president of India. As per Article 52 of Indian Constitution, there shall be a president of India. इतना समझ में आ गया? आर्टिकल अमन कह रहे टू पुट अ स्टैम्प ऑन द लॉ। हाँ भाई ऐसे ही कुछ है, बट आई विल प्रूव इट रॉन्ग। ओके, अब आर्टिकल 52 क्या कहता है? इस पूरे भारत यूनियन का, पूरे भारत देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? नो। नाउ राइट डाउन आर्टिकल 53, राइट डाउन आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 वेस्ट, VEST, वेस्ट मतलब डालना, इट पुट्स। Article 53 vests the executive power of the union, the executive power of the union in the president. Vests the executive power of the union in the president, who can discharge it either personally, or through officers who are subordinate to him, अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? पूरे भारत का there is two types of power, one is political power, one is executive power. भैया पूरे भारत के देश का एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इफ सपोज दिशा इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, इस पूरे देश का एग्जीक्यूटिव पावर दिशा के पास है। नाउ दिशा कैन डिलीवर दैट पावर। भाई ऐसे तो नहीं है कि मैं शक्तिमान तो पूरी की सारे पावर दिशा अपने पास रखते रहेगी, नहीं। शी हैज टू डिलीवर दैट पावर टू द सिटीजन, एंड दैट पावर कैन बी डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय हिमसेल्फ। खुद ही दिशा डिलीवर कर सकती है, और she can deliver that power through subordinate officers. Clear? So basically the president can deliver the power by himself or through subordinate officer. Clear or not? Clear or not? Now you guys are not asking questions these days. I think you guys have learned a lot. Okay, now who are these subordinate officers? These subordinate officers can be IAS, IPS,
IFS, IRS, all the subordinate officers. These subordinate officers can be IAS, IPS, IRS, and IFS. Write down these subordinate officers are civil servants. In bracket, write down IAS, IFS, IRS, so on. Clear? तो भाई पूरे देश का एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है. द प्रेसिडेंट कैन डिस्चार्ज द पावर पर्सनली और थ्रू subordinate officers. Okay, now write a key point. We will write about election of president. So election of president से कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं? Write down article 54. Okay, article 54. अब article 54, what is this article 54 tells that? Article 54 tells in president election, whenever there is a president election, who all are the people who can vote. ठीक है, president election में कौन कौन वोट देगा? ठीक है, now tell me who will vote. Tell me. Arya will tell me. Disha, wait. Disha, you have answered. Arya, please tell me. You have not spoken much today. अगला सत्यम जाएगा अभी. अमन गलत है थोड़ा. Arya has logged out. Whenever I ask a question, her microphone won't turn on. Tim, by president election में कौन कौन वोट देगा? लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स. और कुछ ऐड करना चाहेंगे? चीफ जस्टिस. नहीं यार. Arya, unmuted. Whenever I ask you a question, your microphone doesn't come on. No, Right? sir, I was just on, like, I got just lag thing. I'm stuck. I just clicked it. Anything else? No, sir. Ask. Answer. Who will vote for the president's election? Some members of Lok Sabha and Rajya Sabha, like elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. And else? And who else? And from state legislative assembly. And who else? I don't know, sir. Why are you crying? I'm not trying. Okay. Disha, Yes, sir. tell me. You are now firstly, the elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Secondly, the elected members of the state legislative assemblies and the state legislative assemblies of union territories, that is Delhi and Puducherry. Okay. First person to answer. So, and they all combine and form the electoral college, I think. Answer most correctly was Palak. She wrote an answer: elected members of Parliament, Legislative Assembly of State, and Union Territory of Delhi and Puducherry. Okay, very good. Disha also answered it correctly. Okay, she answered it in chat box. Okay, now president के election में भाई कौन-कौन वोट देता है? ध्यान से सुनना. President के election में कौन-कौन वोट देता है? As per Article 54. Okay, Article 54 के तहत प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट देता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 1, elected. Now don't write in the chat box because मेरा भी सही था. फिर कहां पर फंसे हो भाई? नहीं, तूने पूरा आंसर नहीं दिया था. मेरे को याद है. elected members of लोक सभा एंड राज्यसभा. ओके, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स. गाइस, nominated member does not vote in presidential election. Now, who are these nominated members? Anyone? Who are these nominated members?
Anyone? Manju, who are these nominated members? Hello? So, Manju, who are these nominated members? so Sachin Tendulkar was appointed as MLA. Sachin Tendulkar, Rekha, these people were nominated members. Okay. He was appointed as not as an MLA, he was appointed as an MP. Okay. Jaya Bachchan. Okay. These are the people who have done excellent work in their discipline, like science, literature, art, architecture. Okay. So these are the people who have done excellent work in their discipline. So they are nominated. But president के election में these people are not voting. ओके क्यों भाई ये लोगों को दिस पीपल आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट दिस पीपल आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट अब क्या होता है इफ दिस पीपल आर अलाउड टू वोट द प्रेसिडेंट विल द पर्सन हु इज स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन दे विल कम एंड टेल हिम कि भाई यू वोट फॉर मी व्हेन आई बिकम द प्रेसिडेंट आई विल अगेन नॉमिनेट यू सो व्हाई टू डू दैट why to do that so nominated members are not allowed to vote okay in presidential election it is the only elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha who are allowed to vote. Point number 2, same elected members of state legislative assembly legislative council nahi legislative assembly elected members of state legislative assembly. So these people are made to vote. State members, okay, elected members of state legislative assembly. 12 members of Anglo-Indians can be nominated in Rajya Sabha. Okay, Anglo-Indian community is also represented. Okay, Aman, you are right. Okay, elected members of legislative council in Lok Sabha and Rajya Sabha, elected members of legislative assembly. That means, अब इसका मतलब क्या है? Elected MPs, and इसका मतलब क्या है? Elected MLAs, member of legislative assembly and member of legislative, member of parliament. Okay, these both people vote. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? Anyone has any doubt in this? President is a very important topic. Okay. Now, the third point, elected members. Elected members of union territory, elected members of union territory of Delhi and Puducherry. Only 2 union territories are allowed to vote. That means Delhi के elected members और Puducherry के elected members, they are the only 2 union territories which are allowed to vote in presidential election. Up, Palak, please unmute yourself. Uttam is asking something. भाई क्या पूछ रहे हो? Palak, this is written in the constitution. उत्तम ये constitution में लिखा है. ठीक है और ये बात में ऐड किया गया था. That is what I am going to discuss. ठीक है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ. So have patience. Isha, what you are asking? Palak एक मिनट रुको. Okay. Now listen to my question very carefully. आपने बोला था पलक कि elected members of Union Territory of Delhi and Puducherry are allowed to vote, right? पलक. Yes, sir. आपने ये बोला था ना कि elected members of Union Territory of Delhi and Puducherry are allowed to vote. Now, my question is, as per which amendment act the permission was given to Union Territory of Delhi and Puducherry to vote for president election? Please mute yourself एक बार, voice reflect हो. ठीक है, भारत के संविधान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत, एज पर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट वाज गिवन परमिशन टू वोट
to the MPs Puducherry to vote. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था कि दिल्ली और पुदुचेरी के एमपीज और एमएलए वोट कर सकते हैं? पलक, टेल मी. Your microphone is not working. Others are getting my voice. Others are getting my voice. इन लोगों से क्वेश्चन पूछो ना, आर्य और पलक से, इनका कभी भी वॉइस नहीं बता. Disha, Jammu Kashmir earlier had power to vote. Now it is not added since it was not union territory. Your microphone. Yes. As per which constitutional amendment act Union Territory of Delhi and Puducherry had the right to vote in president's election? ये पहली बार कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया? I don't know. Sir, I don't know. Don't know. Please. Satyam. Unmute. So 70th, In which year? 1992. Yes, Someone. it was 70th Constitutional Amendment Act 1992. The permission was granted to the jury to vote. 70th Amendment Act 1992. It was the year जब पहली बार ये बोला गया था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. सो प्लीज राइट इट डाउन. In first time the permission was granted to elected members of Delhi and Puducherry in write down bracket union territory to vote in presidential election by 70th Amendment Act 1992. By 70th Amendment Act 1992. पलक, अब आवाज आ रही है मेरी? जब भी कोई क्वेश्चन पूछो तो, हाँ बिल्कुल आ रही है. जब भी कोई क्वेश्चन पूछो तो आवाज चली जाती है ना. नेटवर्क, आपकी आवाज लेट आ रही है मुझे. अच्छा. अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये बोला गया था कि दिल्ली और पुदुचेरी के लोग कौन सी प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करेंगे? पता है? वो आवाज नहीं आ रही है. ठीक है. Now this topic is clear. This thing is clear, na? Sir, Now, हाँ. sir, Jammu and Kashmir, the new union territory formed. No, it has not been put into this. Okay. Now listen to me very carefully. मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना. क्या कह रहे हैं? पलक, म्यूट योरसेल्फ यार. नो एल. अमन क्या लिखा है? I am not able to mute. Please mute from your side. कर दिया. अमन क्या कह रहा है भाई? J&K में तो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा. हाँ, तो इसलिए तो मैंने कहा उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया. बस यही है. मेरा क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना. 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये बोला गया था कि दिल्ली एंड पुदुचेरी का यूनियन टेरिटरी है जो कि उसके मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करेंगे. ठीक है. बस इलेक्शन में किस ईयर में वोट किया और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बने थे? So when was the first time the MLAs and MPs of Delhi and Puducherry voted in presidential election and who became the president?
Who became the president? बताओ. First time it was 1997. Agreed, Satyam. Agreed. But who was the president of India then? Who was the president? Write down. K.R. Narayan. Very correct. Very correct. Very correct. Write down. In year 1997, for the first time, MLAs and MPs of Delhi and Puducherry voted. For the first time, MLAs and MPs of Delhi and Puducherry voted. Indian and MPs of Delhi and Puducherry voted, and K.R. Narayan was elected as the president of India. And he was elected as the president of India. Sir, MLA and MPs or only MLAs? MLAs, MLAs and elected MPs. Sir, MPs को तो already होगा ना, right? क्यों होगा? उनको भी नहीं था, MPs होगा. उनको किसी को नहीं था. MLAs and MPs of Delhi and Puducherry दोनों के राइट होना था उसमें. ठीक है. K.R. Narayan के बारे में, he was the first Dalit president of India. First Dalit president of India, person coming from a very poor background became the president of India. Very dynamic president. Okay, इतना समझ में आ गया? K.R. Narayan. Okay. इतना समझ में आ गया कि कौन कौन वोट देगा? Any doubt on this? Any doubt? Okay. Write down Article 55, and this is one of the most complicated topic. मेरे को सबसे इरिटेटिंग और सबसे मतलब वैसा टॉपिक लगता है पॉलिटी का, आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, it is a bit difficult to understand, but have patience, I will explain you this thing. Article 55, the manner of presidential election, the manner of presidential election will be proportional representation of single transferable vote. Proportional representation of single transferable vote. Okay. Now let us come here to a blank slide. It is manner of presidential election is proportional representation of single transferable vote. This is the manner of presidential election. Now, by what is this? ये चीज है क्या? Okay. Can anyone tell what is it? Can anyone tell?
Well done. Sir, hello. I can hear you. Okay. So in this, ranks are given on the basis of ranks, like mm, presidents are chosen on the paper. It has been all the nominated persons' names are written on the paper, Well, and according to that, voting is given, and who will get the highest like number of votes. Like, Navya, switch on your microphone and speak, please. Anyone else who can explain me this concept? So, I'm not completely sure about it, but maybe based on MLAs and MPs, if they are elected from certain state, based on the population, maybe value. No. Anyone else? Anyone else? Aman, वो आना मंजू कोई तो बता दो. So you explained it once, पर अभी याद नहीं हो रही. ये मैंने बताया था, ये नहीं बताया होगा. अच्छा गेम से अब ध्यान से सुनना, ठीक है? I will take 2 examples to explain you this. Okay? एक होते भैया वोटर्स, ठीक है? Suppose there are voters A, B, C, D. ठीक है? ध्यान से सुना. दूसरे क्या होते हैं? अब हम क्या करते हैं? यहां पे लिखते हैं प्रेफरेंसेस. ओके. Suppose there are 1, 2, 3, 4 preferences. Don't write anything or don't do anything just now. Okay. So these are preferences. That means by 4 preferences, so there will be 4 candidates. Definitely, na, there will be 4 candidates. Okay. Now let us make our table. Okay. Now the concept is very simple, guys. अब मैं यहाँ जाता हूँ. I'll change the color of the pen. I'll tell you why I have changed it. See, there are 4 candidates. Let us take example. The first candidate is Arya. Second candidate is Palak. Third candidate is Satya. Fourth candidate is Manju. So who all are our 4 candidates? Palak. Okay. Arya. Manju. And Satya. Okay. These are our 4 candidates. अब क्या कर रहा है भाई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है क्या है कि वोटर ए उसका प्रेसिडेंट इलेक्शन में फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा. आपको चारों लोगों को वोट देना है, बट आपको ये बताना है फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा. सपोज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस इज, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वोटर ए. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट वोटर ए. ओके, suppose his first preference is Arya. Okay, suppose his first preference is Arya. Now suppose his second preference is Palak. That means ये कहना क्या चाहता है कि Arya, he wants the first preference, the president of India. If Arya is not the president of India, others have not voted for Arya. If others have not voted, then he wants the second option he is giving is Palak. Third option he is giving is Manju. Fourth option he is giving Satya. Okay, fourth option he is giving Satya. Now, यहाँ पे I'm just giving you an example. It is not 4 people. The sample space will be huge. I'm just giving you an example. Okay. Now, suppose the second voter, what he does, he gives Arya as his first preference. Okay. He gives Manju has his second preference.
Palak has his third preference. Palak has third preference and Satyam has fourth preference. ठीक है, Satyam has fourth preference. Now what the third voter will do? Third voter will bring Palak as first preference. Palak has first preference. Arya has a third preference. Arya has third preference. Manju is second preference. And Satyam is fourth preference. Satyam is thinking भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई, मैं तेरे को प्रेसिडेंट बनाऊंगा, रुक जा. ठीक है. Now the fourth person is voting Manju as first preference, Palak as second, Arya third, and Satyam. This much you understood, no? Anyone has any doubt in this much? How did I give the preference? I just gave the preference in a random manner. इसमें किसी को doubt है? Ask now, because I'm going to make it complicated. Harsh has doubt, Uttam has doubt. Anyone else? उत्तम ध्यान से सुनो दोस्त, मैंने 4 वोटर्स माने हैं, 4 वोटर माने हैं और मैंने माना है 4 लोगों को वोट देना है. प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए 4 लोग खड़े हैं. कौन कौन खड़े हैं? अपने दोस्त पलक, आर्या, मंजू और सत्य, 4 लोग खड़े हैं. अब भाई 4 लोग खड़े हैं तो मेरे को उनको प्रेफरेंस देना है. ठीक है. अब मेरे को जो बैलेट पेपर दिया गया उसमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर दिया गया है 1 2 3 4. ठीक है. अब मेरे को क्या जानना है? मेरे को बस ये जानना है कि वोटर ए अपना पहला चॉइस किसको रखता है? आर्या को रखता है. वोटर ए अपना दूसरा चॉइस किसको रखता है? पलक. अगर आर्या इलेक्ट नहीं होती तो वोटर ए चाहता है कि पलक हो जाए. अगर पलक भी नहीं होती तो वोटर ए चाहता है कि मंजू इलेक्ट हो जाए. अगर मंजू भी नहीं इलेक्ट होती तो वोटर ए चाहता है सत्यम इलेक्ट हो जाए. सो दिस इज हिज प्रेफरेंशियल ऑर्डर कि भाई आर्या इज माय फर्स्ट चॉइस. इफ आर्या डज नॉट बिकम प्रेसिडेंट, पलक इज सेकंड चॉइस. इफ पलक डज नॉट बिकम प्रेसिडेंट, मंजू इज माय थर्ड चॉइस. और मंजू नहीं तो सत्यम. ऐसे वोटर बी ने भी वोट दिया है कि पहले आर्या चाहता है, फिर मंजू, फिर पलक, फिर सत्यम. फिर वोटर सी ने क्या करा है? पलक को पहले रखा है, फिर मंजू को रखा है, फिर आर्या को, फिर सत्यम को. समझ में आ गया उत्तम? कि एक नहीं तो भाई अगला. Anyone has any doubt? Anyone? Now it is very clear. इतना समझ में आ गया ना? अब भाई करना क्या है? करना क्या है कि हमें ये देखना है किस किस को कितने प्रेफरेंस में ऑर्डर में फर्स्ट वोट मिला. किस किस को कितने प्रेफरेंशियल ऑर्डर में फर्स्ट वोट मिला. दैट मींस आर्या को प्रेफरेंशियल ऑर्डर में फर्स्ट वोट, फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया? 2 people have given आर्या फर्स्ट प्रेफरेंस. 2 people have given आर्या फर्स्ट प्रेफरेंस. ओके. 1 person has given पलक फर्स्ट प्रेफरेंस. 1 person has given पलक फर्स्ट प्रेफरेंस. तो पलक को फर्स्ट प्रेफरेंस किसने दिया? 1% ने. पलक को फर्स्ट प्रेफरेंस 1% ने दिया. ठीक है. और मंजू को कितने परसेंट ने दिया? 1% ने. ठीक है. मंजू को 1% ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया. मंजू को 1% ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया. सत्यम को कितने लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया? किसी ने भी नहीं दिया. सत्यम को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस किसी ने भी नहीं दिया. किसी ने भी नहीं दिया. दैट मीन्स 0. That means 0. That means इस राउंड से कौन एलिमिनेट हो जाएगा? Who will get eliminated? Who will get eliminated? Satyam will get eliminated. ठीक है. Satyam will get eliminated from this round. Okay. सत्यम कह रहा नहीं भाई, मैंने एग्जांपल ले तो दिल पे बात मत कर. ठीक है. अब क्या होगा जब सत्यम एलिमिनेट हो जाएगा? इस केस में तो मैंने सबको सत्यम को फोर्थ रखा था, फोर्थ पोजीशन रखा था. ठीक है. अब हम इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं. समझ में आ गया? जिस राउंड में सबसे कम प्रेफरेंस किसको मिला है वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा. सत्यम को यहाँ पे सबसे कम प्रेफरेंस मिला था, किसी ने भी सत्यम को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया था. ठीक है.
अब एक मिनट, हम थोड़ा यहाँ, ठीक है, मेरे को स्पेस चाहिए टू राइट. नाउ वेट, नाउ द थिंग इज, यार ये एग्जांपल समझ में आ गया था ना कि कैसे एलिमिनेट होते हैं. अब सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उसमें से हमारे पास कौन कौन लोग थे? पलक, आर्या, सत्यम, सत्यम, पलक, आर्य, सत्यम, और वाज इट मंजू, मंजू. ओके, पलक, आर्य, सत्यम एंड मंजू. सपोज आर्या को 100 में से 40% ने वोट दिया. कितने परसेंट ने वोट दिया? आर्या को 40 पीपल. पलक 30% वोटेड फॉर पलक. ठीक है. सत्यम कितने हो गए? 70 ना. 10% वोटेड फॉर सत्यम. एंड मंजू को कितने परसेंट वोट मिलने चाहिए? 40, 30, 70, 80, 20. ओके, मंजू को. अब एक बात सोचो कि ये मैं फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं. फर्स्ट प्रेफरेंस, आई हैव टेकन अ सैंपल स्पेस ऑफ 100 पीपल. ठीक है. अब भाई मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में मैंने आर्या को 40% पीपल हैव सेड आर्या शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 30% पीपल हैव सेड दैट पलक शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 20% has stated that Manju should be president of India. This is first preference. इतने लोगों का first preference है. और सत्यम को बोला कि 10%. ठीक है. अब भाई मैंने तो सत्यम को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस कम था. ठीक है, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस कम था. तो अब मैं क्या करूंगा कि सत्यम को जितने लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया है, हो सकता है सत्यम को अगर 10 लोगों ने सत्यम को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो सत्यम के वोटर्स लिस्ट में कुछ लोगों को इसने सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा. ऑब्वियसली आर्या को सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा कुछ लोगों को पलक को सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा और कुछ लोगों ने मंजू को सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा. सत्यम को 10 लोगों ने वोट किया ना. अब सत्यम का वोटिंग पैटर्न देखते हैं. एक मिनट, आई विल मेक इट हियर. अगर सत्यम को जो 10 लोगों ने वोट दिया है, 1 2 3, ऐसे सत्यम को 10 लोगों ने वोट किया. अगर इस 10 में से अगर सबने सत्यम को फर्स्ट पोजीशन में रखा है तो इसमें से सत्यम को जिन्होंने वोट दिया उसमें किसी ने आर्या को सेकंड पोजीशन में रखा होगा, किसी ने पलक को सेकंड पोजीशन में रखा होगा. ठीक है, तो किसी ने मंजू को सेकंड पोजीशन में रखा होगा. अभी 10 लोग है ना. सत्यम को इन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है. But second preference में it could be Arya, it could be Palak, it could be Manju. Agreed or not? Agreed or not? Navya, you are asking something? Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? Pakka? So it is very simple. Baba, अब जो सत्यम को सेकंड प्रेफरेंस, हो सकता है पलक को सेकंड प्रेफरेंस दिया है. आप सपोज यहां जाओ, सत्यम के 10 वोटर्स हैं. ठीक है, सत्यम को जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया. अब भाई सत्यम तो एलिमिनेट हो गया. अब हम देखेंगे, हो सकता है उस 10 वोटर्स में से 4 लोगों ने, 4 लोगों ने पलक को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, पलक को सेकंड प्रेफरेंस दिया. दैट मींस सत्यम को जिन्होंने 10 पे फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था, जिन 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था उसमें से 4 ने पलक को सेकंड प्रेफरेंस दिया. तो हम क्या करेंगे, उस 4 के वोट को पलक के वोट के साथ ऐड कर देंगे. हो सकता है सत्यम के जो 10 लोगों ने वोट किया है उसमें से 5 लोगों ने मंजू को सेकेंड प्रेफरेंस दिया है, तो मंजू के वोट पे 5 ऐड हो जाएगा. अगर सत्यम को किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो हो सकता है तो 4 5 9, एक बंदा जो है वो आर्या को सेकेंड प्रेफरेंस देता है तो आर्या के वोट में 1 ऐड हो जाएगा. ठीक है. अब क्या कहा, आर्या इज 41, पलक इज 34, मंजू इज 25. दैट मींस
मंजू इज एलिमिनेटेड इन दिस केस। अब ये देखेंगे मंजू के केस में मंजू को सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस में से पलक और आर्या को किस किसने दिया है, और वो इसमें से प्लस कर देंगे। That means the vote of present is getting transformed. That is single transferable vote, proportional representation of single transferable vote. देखो, it is very simple. I am going to explain you once again. Listen to me very carefully. This concept is not going to be asked in your exam. I am very much sure about it. They will ask the just name of that concept, which is the voting pattern which is used for the president election. It is proportional representation of single transferable vote. But as I wanted my students to learn this concept is very simple. आपके पास कैंडिडेट्स होंगे, देयर विल बी 4 or 5 कैंडिडेट, ईच वोटर, इफ देयर आर 100 वोटर, ईच पर्सन हैज टू गिव प्रेफरेंस। आर्या इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, पलक इज माय सेकंड प्रेफरेंस, सत्यम इज माय थर्ड प्रेफरेंस एंड मंजू इज माय फोर्थ प्रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद व्हेन द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग हैपेंस, द पर्सन हु इज गेटिंग लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, जिस व्यक्ति के पास सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस है, सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो बंदा टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। अब भाई उस बंदे को भी किसी ने वोट दिया होगा, 10 लोगों ने वोट दिया होगा, उसको भी 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा होगा। अब क्या हो जाएगा, उसके केस में उस बंदे का सेकंड प्रेफरेंस चेक करेंगे। उस बंदे का सेकंड प्रेफरेंस में हो सकता है उस 10 बंदे में पलक को 4 लोगों ने प्रेफरेंस दिया, मंजू को 5 ने दिया, आर्या को 1 ने दिया, तो वो उस पर ऐड करेंगे। सेकंड केस में मंजू एलिमिनेट हो गई है, मंजू को थर्ड प्रेफरेंस किसने दिया था, मंजू को थर्ड प्रेफरेंस मंजू के केस में जिस वोटर ने मंजू को थर्ड प्रेफरेंस दिया था उसको देखेंगे। हो सकता है 4 लोगों ने दिया, पलक को 2, आर्या को 2, हो सकता है उसमें सत्यम को भी दिया, बट सत्यम को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सत्यम इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। सपोज आर्या को 2 लोगों ने दिया है और पलक को 1 लोगों ने दिया, तो आर्या में 2 और पलक में 1 ऐड कर देंगे। क्लियर? So second case clear है, जब मंजू एलिमिनेट होगी उसके बाद जैसे कौन एलिमिनेट होगा, नाम से बताओ। मंजू एलिमिनेट होगी। अब हमने सेकंड प्रेफरेंस तक कैलकुलेट कर दिया था सत्यम के केस में। मुझे यहीं पे डाउट है सर कि जो जिन लोगों ने मंजू को वोट दिया है उनकी हम फिर हाँ ना, सेकंड क्यों देखेंगे, सेकंड तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना। वो तो हमें सत्यम एलिमिनेट हुआ, सत्यम की सेकंड प्रेफरेंस देखी थी। हाँ तो जैसे मंजू अगर एलिमिनेट हुई तो जिन लोगों ने मंजू को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा उनकी सेकंड प्रेफरेंस नहीं देखेंगे। मंजू का तो हम सेकंड प्रेफरेंस कैलकुलेट कर चुके हैं ना सत्यम के केस में। सत्यम के केस से हमने देखो मंजू का फर्स्ट प्रेफरेंस हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमने फर्स्ट प्रेफरेंस आर्या का देखा, पलक का देखा, मंजू का देखा और सत्यम का देखा। सत्यम का सबसे कम था, हमने सत्यम को हटा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, सत्यम को हटा दिया, तो सत्यम का सेकंड प्रेफरेंस क्या था, सत्यम को जिस जिसने वोट दिया उसका सेकंड प्रेफरेंस देखा। जब सत्यम का सेकंड प्रेफरेंस देखा तो उसमें मंजू का भी तो इंक्लूडेड था जो मैंने यहाँ ऐड किया। समझ में आया भाई? सत्यम के 10 लोगों ने सत्यम को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है ना, तो इस 10 लोगों ने जब सत्यम को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा तो इन लोगों ने, कुछ लोगों ने मंजू को सेकंड प्रेफरेंस रखा था, वो 5 लोगों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, तो मंजू का जो सेकंड, हाँ वो यहाँ पे कवर अप हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे वो चीज कवर अप हो गया। तो अगर ये मंजू को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से, तो अब मेरा सेकंड राउंड का वोटिंग कैलकुलेट हो चुका है। दैट इज आर्या के केस में 41, 34 पलक के केस में एंड 25। तो मैंने मंजू को एलिमिनेट करा, तो अब मैं थर्ड प्रेफरेंस के लिए जाऊंगा। हर राउंड में कैंडिडेट एलिमिनेट करने के बाद मैं अगला प्रेफरेंस और देखूंगा। इतना समझो, एक कैंडिडेट एलिमिनेट हुआ तो फिर मैं सेकंड देखूंगा, सेकंड एलिमिनेट हुआ तो थर्ड देखूंगा, और थर्ड एलिमिनेट हुआ तो मैं फर्दर देखूंगा। ठीक है, एंड गाइस कैंडिडेट्स होते हैं उतनी सारी प्रेफरेंस सबके लिए लिखनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आई वाज गोइंग थ्रू द लक्ष्मीकांत एंड देयर इज ओनली वन लाइन रिटन ऑन दिस, नो एक्सप्लेनेशन, नो एग्जांपल इज गिवन. Even in YouTube also there are not much videos, so don't get confused.
ठीक है, I have seen videos where people are explaining this concept wrongly. Okay, I have seen videos. There are videos who are made by eminent persons, but that they have explained this concept wrongly. ठीक है, so make sure you're following. If you are learning this step, now it is like this only. I'm pretty much sure. Okay, so in Lakshmikant, it is only one line written because it is not asked in UPSC much, so they have written only one line. Okay. सर हाँ, सर वो अभी जो डिस्कशन चल रहा था, लाइक हमने जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें एम में जो 20 है उनके फर्स्ट प्रेफरेंस में एम होंगे, बट उनके सेकंड प्रेफरेंस में हो सकता है आर्या पल्लव या फिर मतलब सत्यम के केस तो हट जाएंगे, बट ए और पी वाले केस उसमें भी होंगे ना सेकंड प्रेफरेंस में, जो पहले के 20 प्रेफरेंस। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। इस केस में क्या होता है कि हमें एक राउंड के वोटिंग के कंपाइलेशन के बाद हमें नेक्स्ट राउंड पे जाना चाहिए, ठीक है, फिर हम वापस सेकंड प्रेफरेंस नहीं देखेंगे, फिर हम हर वक्त थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। ओके सर, तो उन लोगों का जिनका प्रायोरिटी होगा कि एम के बाद ए पी वो वाले पर्सन, तो आप वो ये कह रहे हैं कि वाले मंजू का सेकंड प्रेफरेंस क्यों नहीं देखा? मंजू का सेकंड प्रेफरेंस वाले हमने सत्यम से उठाया है। ये सब उससे हाँ, वो जो 5 ऐड किए थे वो तो सत्यम के जो सेकंड प्रेफरेंस वाले से उठाए थे, बट जो बाकी के 20 थे जो जिसमें मंजू को फर्स्ट प्रेफरेंस मिले थे उनमें सेकंड प्रेफरेंस में होंगे ना, जिनमें पल्लव और आर्या वाले केस होंगे। सुनो, मंजू को 20 जो केस मिले थे, ठीक है, अब मंजू के सेकंड प्रेफरेंस में हो सकता है सत्यम भी हो सकता है, बट सत्यम का हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एलिमिनेट हो चुका है। यस, एलिमिनेट हो चुका है। मंजू का खुद का कंसीडर, मंजू का तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता ही है, सेकंड प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें पलक एंड आर्या होंगे, बट हमारा सेकंड प्रेफरेंस का काउंटिंग ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो इसलिए हम हर वक्त कैंडिडेट, जितना कैंडिडेट एलिमिनेट हुआ है, तो मतलब पहला एलिमिनेट हुआ है तो हम दूसरा प्रेफरेंस देखेंगे, दूसरा एलिमिनेट हुआ है तो हम तीसरा प्रेफरेंस देखेंगे। यस, ठीक है, अगर पहला एलिमिनेट हुआ है तो दूसरा देखेंगे, और दूसरा एलिमिनेट हुआ है तो तीसरा देखेंगे, और तीसरा एलिमिनेट हुआ है तो फोर्थ देखेंगे, और फोर्थ देखते ही वो वोटिंग क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ही कैंडिडेट बचेगा। यस, ठीक है, यस। समझ में आ गया? एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन? Okay, that's all for, but don't worry about this methodology, it won't come in your exam, but I wanted you guys to know it, what exactly. So that's all for today's class. Tomorrow we will continue with the things. Okay, and please write this example somewhere, so after so many years when you are learning the things or you are teaching someone, no, so you should give this example. It's not about clearing the paper or what is coming in the paper. यार एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, हमने जो अपने बच्चों को पढ़ाया ना उसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है. सो प्लीज राइट दिस एग्जांपल, एंड आई हैव डन लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन दिस. ओके, आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक, नो, I was not able to put into example. So whoever I was getting in the academy, I was calling them and I was like, I'll explain this to you. This is a method. So they were like, why we need to learn this? I need to teach someone, so learn from me. So I have tried it in multiple examples, this thing. And this is a very good concept. You can explain it to others also. Okay. So that's all for today. Thank you so much and have a nice day. Have a nice history class. Okay. So tomorrow there are plenty of things. I will give one main answer also. Okay. Thank you. Have a great day.